वेलकम टू वीलर्न। वीलर्न में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट चेंज मैनेजमेंट, सेशन नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ चेंज मैनेजमेंट। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन: ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डायमेंशन ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, मैनेजिंग एनवायरनमेंट, डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट। नाउ organizational structure. All the organizations comprises of certain components. These components perform various functions and are interdependent on each other for the smooth functioning of the organization. सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सर्टेन कंपोनेंट्स से बंधे हुए होते हैं और वो कंपोनेंट जो हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एंड दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जुड़े हुए होते हैं या निर्भर करते हैं। An organizational structure is a framework that provides a particular space for a particular department and shows its relationship with other departments. और हर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर फ्रेम इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि जो कि दूसरे डिपार्टमेंट्स के से रिलेशनशिप को शो कर सके या आपस में इंटीग्रेट या कोऑपरेशन करके स्मूथली फंक्शन कर सके। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स द फॉलोइंग: organizational chart, chain of command, distribution of authority, departmentalization, span of control. Dimension of structures. According to Robbins, organizational structure has 3 dimensions. Number 1, formalization. Number 2, centralization. Number 3, complexity, including horizontal differentiation, vertical differentiation, and spatial differentiation. Organizational design. Organizational design is a process to improve the probability of an organizational success. It is a formal and guided process for integrating people's information and technology of an organization. It is used to match the present form of the organization as closely as possible to the target the organization want to reach and be successful. Hierarchical system. Western organizations are highly influenced by the command and control structure of ancient military organization and today's scientific management. Activities are organized within the sub-units or the department in which people perform particular functions such as manufacturing, sales or accounting. People who perform similar tasks are put together. Functional hierarchy, through looks very familiar and rational, has some distinctive disadvantages. It cannot be applied blindly. इनको जो है blindly हम apply नहीं कर सकते हैं on all purposeful groups within the organization. To understand the problems, first begin to observe that different groups desire to achieve different outcomes. देखिए अलग अलग ग्रुप जो होते हैं उनके ऑब्जर्वेशंस भी डिफरेंट तरीके के होते हैं एंड ऑल्सो दे डिजायर टू डिफरेंट आउटकम्स, और अलग तरह के वर्क जो है चाहते भी हैं। सेकंड, ऑब्जर्व दैट डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट एंड यूनिक मेंबर्स एंड दैट ईच ग्रुप हैज ए डिफरेंट कल्चर। पर्पज फॉर ऑर्गेनाइजिंग. द पर्पज फॉर विच ए ग्रुप एग्जिस्ट शुड बी द इंस्टीट्यूशंस फॉर द होल थिंग्स its members do, which also includes the choice of an appropriate way to organize. The idea here is to create a way of organizing that suits the purpose to be accomplished without considering the way in which other dissimilar groups are organized. Design process. Organizational design starts with the creation of a strategy, a set of decisions, guidelines or plans, and by following it members will perform appropriate actions. Creating a strategy means planning and not organizing. Strategy को जो है प्लान करना होता है और फिर जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। Organizational structure defines the recognized relationship among peoples. Organizational structure ये define करता है कि how the people are recognized to each other and what is the relationship between or among the peoples, and specifies both their roles एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उनके क्या क्या रोल्स होते हैं और उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। चॉइस एक्सरसाइजिंग. ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बी सेंस दैट बाई एक्टिंग इन ग्रुप
we may overcome our individual limitation. When we organize, we try to direct the activities of a group of people toward a common outcomes. Pattern of activities that are harmonizing and interdependent results in the achievement of intended outcomes. In contrast, activities patterns that are dissimilar and independent produce unpredictable and often unintended results. Organizational design model, business climate, like set the stages, then gather the data, design transformation, then implement and evaluation. इस तरह से स्टेपिंग होती है कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज टेक प्लेस. सबसे पहले स्टेजेज आपको पता लगाना है, देन डाटा गैदर करना है, उसके बाद डिजाइन ट्रांसफॉर्मेशन होती है और उसके बाद आप इंप्लीमेंट करते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विद इंटरनल रूल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन. सभी ऑर्गेनाइजेशंस के अपने अपने रूल्स होते हैं और उसी के थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन करते हैं. The owners of the organization design the basic principle and component of the organization. The owners of the organizations also have to set certain basic rules for the present conditions of the organization and to its future organizational development. Component of organizational design. The rules are focused in the following areas. Number 1, span of control. Number 2, authority. And number 3, accountability. And now managing environment, a single set of construct and a single set of measures of the organizational environment are not widely accepted. The three construct, complexity, instability and resource availability are common to most environmental research. Environmental management system, EMS is the management of an organization's environmental programs in a planned, systematic and comprehensive and documental manners. An environmental management system serves as a tool to improve environmental performance. Number 2, provides a systematic way of managing an organization's environmental issues. And number 3, focuses on continuous improvement of the system. So these are 3 steps of an environmental management system. Now EMS model. An EMS follows a plan, do, check, act PDCA cycle. The EMS model first develops an environmental policy, planning the EMS and then implementing it. The model is continuous, as an EMS is a process of continuous improvement in which an organization constantly reviews and revises the system. Some of the key elements of an EMS are as follows. Number 1, statement of policy. Policy का statement तैयार करना. Second is identification of significant environmental impact, और इस बात को आइडेंटिफाई करना कि इस क्या से महत्वपूर्ण इम्पैक्ट इससे इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ने वाला है. देन डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट, और अपना उद्देश्य और टारगेट को डेवलप करना है. नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, और प्लान को इम्प्लीमेंट करना है. एंड अदर स्टेप इज ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉइज रिगार्डिंग एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद में अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देना कि आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज एनवायरमेंटल स्टडी के लिए होंगी. देन मैनेजमेंट रिव्यू, और उसके बाद जो जितने भी स्टेप्स आपने लिए हैं उनको रिव्यू करेंगे. ISO 14000 and ISO 14001. ISO International Organization for Standardization is located in Geneva, Switzerland. It is a non-governmental organization established in 1947. ISO 14000 is a family of volunteer standard and guidance documents that help organization to address environmental issues. ISO published the first edition of ISO 14001, the EMS standard, in September 1996. ISO 14001, there are 17 requirements of the ISO 14001-2004 standard. Some of them are environmental policy. Number 2, environmental aspect and impact. Number 3, legal and other requirement. Number 4, structure and responsibility. Number 5, communication. Number 6, document control. And number 6, operational control.
then complexity, then instability or dynamism, then resource availability. Thomson's 1967 two environmental dimensions are heterogeneity or homogeneity and stability and dynamism. And now do it yourself. Question number 1, what are the three dimensions of organizational structure? And question number 2, what is organizational design? And that's it from session number 2. Thank you.